Hello there, everybody. Welcome back. Welcome back. Today we're going to be watching and reacting to a Career247 video. So PD10, everyone, for maximum discount. Go to his page here, PD10, maximum discount. Anyways, today's video topic is on the Chabahar port. Hopefully I said that correctly. I don't know if I did or not. But it's a super important port. It's a partnership between India and Iran, and potentially a highly valuable target for Israel. Now, if you don't know, or if you do know, I'm sure everyone knows, right? Israel is, setting into motion a huge wave of onslaughts onto Iran, attacking and destroying key facilities in the country. And what is more key to a facility than anything else? Really, a port. Because right now, Iran is also trying to ship out as much oil to get investment money. They're trying to ship in, different things from different countries as well to help aid in the war effort. So these ports are highly valuable. But what does that mean for India? I guess we're going to find out today. Link to the video will be in the description down below, everybody. So please go and check it out. And again, the title of the video is Will Israel Bomb Chabahar Ports? India's investment is at risk in war. Now, this port was developed and built to counteract the Chinese port that was built in Pakistan. So it is a very valuable port. नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ईरान और इजराइल की वॉर को 7 दिन पूरे हो चुके हैं। यूएसए ने अभी तक ऑफिशियली इस Not वॉर yet. में पार्टिसिपेट Not yet. We're probably thinking this weekend sometime. I think Trump set a time frame of 2 weeks. He has 2 weeks to decide, but it's probably going to come a lot sooner if he does decide that we're going to war. अपनी स्टार्ट करी नहीं है। ट्रंप देखिए इजराइल को टेस्ट कर रहे हैं। लगातार यूएसए की इन्वॉल्वमेंट इस वॉर में डिले करते जा रहे हैं। अभी यूएसए ने कहा है कि अभी 2 हफ्ते बाद देखेंगे कि हमको Yeah, डायरेक्टली see? इस वॉर में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना, क्योंकि ट्रम्प मानते हैं कि क्या पता इस बीच कुछ सुलह हो जाए, कोई सीज फायर वगैरह हो जाए, जबकि इसकी पॉसिबिलिटी कोई लग नहीं रही। कल आप अगर देखो तो इजराइल ने यह एनिमेशन दुनिया के साथ शेयर किया। इजराइल ने दुनिया को यह बताया कि Israel Defense Force. This nuclear reactor in Arak was created for one purpose, to build a nuclear bomb. It has now been neutralized. Here's a closer look at the reactor itself. ईरान का एक न्यूक्लियर रिएक्टर है अराक में। इस न्यूक्लियर रिएक्टर को इजराइल की एयरफोर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि इजराइल का यह मानना है कि इस न्यूक्लियर रिएक्टर का सिर्फ एक काम था, एक न्यूक्लियर बॉम्ब बिल्ड करना। तो ईरान के इस तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। सडनली ये भी न्यूज आ रही है कि ईरान में लगातार एक के बाद एक भूकंप आ रहे हैं। इसका रीजन क्या है, नो वन रियली नोज। मगर ईरान भी अपनी Well, I mean, I think the majority of the world can only assume that Iran is testing out their nuclear facilities as quickly as possible. They're trying to build that bomb so they could drop it on, Tel Aviv or somewhere. की तरफ से लगातार इजराइल पे अटैक कर रहा है। रिसेंटली आपको बताऊंगा कि इजराइल के एक बड़े हॉस्पिटल में ईरान के मिसाइल्स गिरे हैं, जिससे भारी नुकसान हुआ है इस पूरे हॉस्पिटल में। तो एक ऐसे टाइम में जब न्यूक्लियर रिएक्टर को अटैक किया जा रहा है, जब हॉस्पिटल्स को अटैक किया जा रहा है, सिचुएशन लगातार खराब हो रही है। एज इंडियंस हमारा कंसर्न क्या है? देखिए, ऑपरेशन सिंधु के अंडर हम लोगों ने ऑलरेडी ईरान में इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए वहां पर गए थे, उनको निकालने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। कई इंडियंस को हम अर्मेनिया के रास्ते True. I did see a bunch of video. I haven't been making YouTube videos for like the past 2 days, but I did see a bunch of video on Twitter of like these shuttle buses getting Indian students out of Iran. I think everyone should get out of Iran. If even Iranians probably should get out of Iran right now. Let's just be real. वापस दिल्ली ला चुके हैं। हालांकि जो इंडियन स्टूडेंट्स को हम वापस लेके आए हैं, इनमें से बहुत सारे कश्मीर के हैं। उन्होंने ये कंप्लेन करी कि देखिए, दिल्ली में तो आप हमको ले आए, मगर दिल्ली से कश्मीर कौन छोड़ेगा? पूरा इंतजाम करना चाहिए था, कश्मीर भी लेके जाओ हमको। और अभी ऑपरेशन सिंधु के अंडर जो बहुत सारे भारतीय आज के समय इजराइल में भी हैं, उनको भी इवैक्यूएट किया जाएगा, क्योंकि अगेन ये वॉर कहीं से भी लगता नहीं है थमेगी। मैंने रिसेंटली एक कोट सुनी थी फ्रॉम ईरान। वो लोग ये कह रहे हैं कि अब अगर सीज फायर हो गया ना, तो इससे इजराइल को टाइम मिल जाएगा अपनी सप्लाईज को वापस बिल्ड करने का और ज्यादा मिसाइल्स डेवलप करने का। ईरान यहां पर मान रहा है कि धीरे धीरे
इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम कमजोर होता जा रहा है। इनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम की एफिशिएंसी पहले दिन थी True. 90%, अब True. गिरकर 60। I think it's been estimated that Israel is spending like 200 million USD a day on air defense. $200 million a day on air defense. That's crazy. 5% के आसपास हो गई है। और ईरान अभी कह रहा है इनके जो अभी सबसे ज्यादा अत्याधुनिक मिसाइल है ये इन्होंने यूज भी नहीं किया, तो ईरान कहीं से भी सीज फायर करने के मूड में नहीं है। और इससे देखिए खतरा बन जाता है भारत की $550 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पर। जी हाँ, मैं यहाँ पर चाबहार पोर्ट की बात कर रहा हूँ। इस वक्त देखिए इसराइल को अगर मान लीजिए कहीं पे भी अटैक करना होना ईरान में, तो वो अटैक कर सकता है। बिल्कुल चाबहार पोर्ट भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्योंकि Oh, is it only 10-year agreement? Oh, I thought it was much longer than 10 years. Is it really only 10 years? There must be like some sort of contingency in the agreement to allow for continuation. अगेन कुछ अब लिमिट बची नहीं है। मैंने रिसेंटली ये देखा, रशियन गवर्नमेंट ने इजराइल को एक वार्निंग दी है। पहले तो व्लादिमीर पुतिन ने Yeah, Vladimir Putin wants to play mediator. The same way that Trump wants to. Trump wants to try to set up ceasefire deals and whatnot. But I think it would be a little bit harder for the rest of the world to listen to Vladimir Putin, try to set up a ceasefire deal between Israel and Iran, considering, Putin is still currently at a war right now. Probably the biggest European war since, World War II. So, yeah. I don't think the West will listen to Putin, Israel included, because Israel is an arm of the West, right? They won't listen to Putin on this. नेतन्याहू से बात करने की कोशिश करी। जब रशियंस को लगा कि बातचीत करने से कुछ होगा नहीं, तो रशिया ने ओपनली ये कहा कि देखिए हम लोग एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं ईरान में। एक्चुअली 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट रशिया बना रहा है ईरान में। तो रशिया ने यहाँ पर वार्निंग ये दी है कि अगर ईरान के इस अंडर कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियर प्लांट को अटैक किया गया, तो इससे चेरनोबिल स्टाइल डिजास्टर हो सकता है। चेरनोबिल आपको पता होगा यूक्रेन में एक Well, if शहर it's है under यूएसएसआर। control, hold on. If it's under construction, that means it's not in operation currently, right? Which means there should be no nuclear material that that could cause radiation, right? If it's under construction, usually that's like the last thing you test. No? के जमाने में यहाँ पर रेडिएशन लीक हो गया था, जिसकी वजह से बहुत से लोग मारे गए। I think they're just I don't know about this, because if it's under construction, there should be no worry for a nuclear radiation leak. आज भी अगर हम देखें तो रहने लायक नहीं है, वहां पर रेडियो एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो रशिया ने ओपनली इजराइल को यह कह दिया है कि जो अंधी बॉम्बिंग की जा रही है, रिएक्टर्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, इस बीच हमारा जो अंडर कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियर प्लांट है इस पे अटैक मत कर देना। इसका इंपैक्ट पूरा एशिया महसूस करेगा। और कहीं ना कहीं देखिए कई रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं कि भारत ने भी इजराइल को यह कहा है कि इवन दो ईरान ने इजराइल के हाइफा पोर्ट को अटैक किया है। हाइफा पोर्ट जैसे आप लोग जानते हैं आज के समय अडानी ग्रुप ओन करता है। इवन दो हाइफा पोर्ट पे अटैक हुआ है, भारत ने यह कहा है इजराइल को कि चाबहार पोर्ट पे अटैक मत कर देना, क्योंकि इससे भारत की जो इन्वेस्टमेंट है $550 मिलियन की, ये कई साल पीछे चली जाएगी। चाबहार पोर्ट को डेवलप करने में ही हमको बहुत टाइम लग गया, क्योंकि यूएसए ने सैंक्शन लगा रखे हैं ईरान पर। क्रेन्स It's a nice कैसे यहाँ port. पर I mean, पहुंचाई when you look at it, it's a nice little port. गई, कैसे कैसे यहाँ पर Little. कंस्ट्रक्शन हुआ। It's आज के huge. समय इजराइल के 3-4 मिसाइल यहाँ पर गिरने हैं और सब कुछ ये सपाट हो जाएगा। चाबहार पोर्ट विल बी डिस्ट्रॉयड। और इसलिए आपने देखा होगा कई भारत के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने ही इंटरनेशनल मीडिया में ऐसे लेख लिखे हैं कि इजराइल का जो ये ओपन अटैक है ऑन ईरान, ये एक जियोपॉलिटिकल ब्लो है भारत के लिए। जो भारत का ग्रैंड प्लान था चाबहार को यूज करके सेंट्रल See, एशिया, रशिया। this is the main issue, with geopolitics, is everyone has, different plans and, partnerships with everyone else, and, one wrong move and then your friend is attacking your other friend and you're just stuck in the middle like, whoa, 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 what's going on? Can we talk this out? It becomes a huge issue. यूरोप तक पहुंचना ये अभी के लिए देखिए बहुत ही बड़े खतरे में लग रहा है। अ वीकेंड ईरान will jeopardize India's foothold in the region while benefiting our rival Pakistan। ज्यादातर जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये मान के चल रहे हैं कि एक बार ईरान कमजोर हो गया तो रीजन में पाकिस्तान का दबदबा बढ़ जाएगा। नाउ अगेन इसका एक काउंटर आर्गुमेंट कई लोग ये देते हैं कि इजराइल करना क्या चाहता है। क्या इजराइल ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करना चाहता है? नहीं। ऑपरेशन राइजिंग लाइन के अंडर इजराइल का मेन टारगेट ये है कि अभी जो इस्लामिक गवर्नमेंट है ईरान में, इसको ओवरथ्रो करके ये जिस तरीके से शाह ऑफ ईरान के टाइम की सरकार थी ईरान में, काफी प्रो वेस्टर्न Which
Instill a सरकार थी pro-Western वो government in Iran? Well, yeah, I mean, they would instill the previous government, right? I mean, the guy's still alive from the previous government, correct? The ruler. But what is weird about that is apparently, according to Trump, we know where he is. So if that was the main goal, what's taking so long? इंस्टॉल कर दे ईरान में, तो एक बार अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद ईरान ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ईरान जिस तरीके से काफी बार पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा होता है, इवन इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट देता है कश्मीर के इशू को लेकर, ईरान की वैसी पॉलिसीज नहीं रहेगी। बट अगेन देखना यहाँ पर यह होगा कि इजराइल जो करना चाहता है, क्या इसमें इनको सक्सेस मिलेगी, या फिर इजराइल फ्रस्ट्रेशन में आकर ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये इतना बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा कि ईरान की कुछ जो बची कुछ इकोनॉमी है ये भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और इजराइल का देखिए अभी के लिए जो ऑब्जेक्टिव है ईरान में, इसको लेकर इन्होंने रिसेंटली 1 मिनट की वीडियो रिलीज करी है। ये वीडियो मैं चाहता हूं आप लोग देखें। For over 4 decades, the Iranian people have lived under fear, control, and repression. ये यहाँ पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं जो 1979 में हुआ था, और तब से लेकर अब तक जो ईरानियन सरकार है ये बहुत ज्यादा एंटी इजराइल है। This is not just a story about a military force. This is a story about a people yearning for freedom, caught in the middle of a regime that fears the freedom of its own citizens more than any foreign threat. Founded after the 1979 revolution, the IRGC has evolved into a powerful terrorist institution that silences the struggling Iranian people, crushes any opposition, and exports terror beyond Iran's borders, all while claiming to defend Islamic values. In 2009, they shot protesters demanding fair elections. In 2019, they killed over 1,500 civilians in a matter of days. This is unfortunately very, very common in Islamic ruled nations. During anti-government unrest. And I'm not And in saying, 2022, Islam is the core of the issue here. I think it's Islamic extremists having control, which is the core of the issue, because you have other countries that are, Muslim ran, right? That are perfectly fine. That don't have this level of extremism and depravity and, hatred towards others. Watched as 22-year-old Mahsa Amini died in the custody of Iran's so-called morality police, sparking a nationwide uprising. Students, women, journalists, Kurds, and Balochis have been and still are persecuted. Through surveillance, torture, executions, and exile, the IRGC has turned the country into a prison for its own people. Now, यहाँ पे आपने सुना इजराइल का जो ये नैरेटिव है ये है कि ईरान की सरकार ने खुद अपने देश को एक जेल बना के रख दिया है, और यहाँ पे मासा अमीनी की मौत हो जाती है, यहाँ पे इलेक्शन फेयर तरीके से नहीं होते, डेमोक्रेसी नहीं है, जो अल्पसंख्यक है उनके कोई राइट्स नहीं है, वेमेन के कोई राइट्स नहीं है वगैरह, ये इन्होंने यहाँ पर ऐसी बातें बोली हैं। नाउ क्वेश्चन ये आता है, ईरान का जो आम जनमानस है क्या इस इशू के बेसिस पर अपनी सरकार से बगावत करेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं इजराइल को I mean, I've seen a lot of video footage online of people praising, like Iranians specifically praising Israel here. Also, ironically enough, I've seen video footage of like protesters in Europe and the USA, and the protesters against Israel that are pro-Iran against Israel are there, and the people that are in opposition of them are Iranians. It's like the juxtaposition is so awkward. It's so weird. It's like you have this big group of people that are going pro-Iran, because it's anti-Israel, and then you have these this Iranian diaspora in those countries saying no, hold on, no, you shouldn't be pro-Iran here. The world is confusing. इंटरनल रेबेलियन भी चाहिए होगा। डोनाल्ड ट्रंप काफी इसमें मैं कहूंगा चालाकी से वेट कर रहे हैं कि इजराइल का जो ये मूव है क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है, क्या ईरान इंटरनली डिस्टेबलाइज होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो यूएस ईरान से बिल्कुल दूर रहना चाहेगा, नहीं तो उस केस में जैसे आप लोग समझ सकते हैं, जैसे यूएस अफगानिस्तान में फंस गया था 1 दशक से भी ऊपर तक, ईरान में भी लंबे समय तक फंस जाएगा डेमोक्रेसी लाने के चक्कर में। तो आने वाले 2 हफ्ते देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। यूएसए की इन्वॉल्वमेंट ईरान के केस में कितनी रहने वाली है, क्या यूएस इजराइल Easy solution. Just let India take it over. Just let India take Iran over. Easy solution. के समर्थन में आएगा, खुल के नहीं आएगा, ये सब काफी हद तक डिसाइड करेगा कि भारत की $550 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है चाबार पोर्ट में, इसका इवेंचुअली आखिर होगा क्या। तो कुछ अपडेट्स आती है इसके रिगार्डिंग, मैं आपके लिए नई वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए मेरा मानना है अगर आज के समय I don't know.
I don't know. I don't know. They might do it. They might do it just simply because Iran is utilizing as many ports as possible to try to get as much oil out of the country to fund their military operations. Um, so if there's any sense of movement there, whether the port is I don't know. I don't know. We'll see. That's all we can say is we'll see, right? Like who really has the answers? The only ones that have the answers are the Israeli military, and that information really isn't being leaked out. They have a pretty tight seal on no information being leaked. I mean, we look at past incidents like the pager attack, or even in this instance, they did they did the what the Ukrainians did to the Russians, right? They had these trucks inside of Iran themselves that launched drones even. So there's a lot with Israel that is tight-lipped. We won't really know until it kind of happens, unfortunately or not. So, PD10, everyone. PD10. Use code PD10. What? He went away from the guy. All right, PD10, guys. Use code PD10 to get maximum discount. Let's read some of these comments, yeah? Let's read some of the comments here. Bring them back to Iran. Bring them back to Iran? Oh, the people complaining that they weren't dropped off in Kashmir. They're complaining that they got left in they got brought back to safety in Delhi, but they weren't taken to Kashmir. Man, the one thing that I dislike the most is that women are forced into wearing these hijabs and these covers and whatnot. Like, it just feels so demeaning, doesn't it? It really just feels like they're being I don't know. Kashmir student is harmed by PD, sir. Let them stay there. Why should they take more here? These people have become used to free food when they can go to Iran from India. Why can't they go from Kashmir to Kashmir from Delhi? If all this is a threat to India, then leave it back. Government had provided them buses, but these students wanted flight tickets on taxpayer money. I want everything for free. Okay. Why India should help Israel now? All these right here. There's 13,000 Indians happily living in Israel. Interesting. Very, very interesting. Day after day, I've become addicted to this geopolitic news. It becomes taxing after a while. It becomes taxing. My sleep schedule was absolutely ruined trying to follow everything. So I forced myself to take a step back and just try to fix my sleep schedule. And I think I finally did, as you can kind of notice from the lighting in my room here. It's 7:30 in the morning at the time of recording this, so I think I've fixed my sleep schedule, which is kind of bad for releasing videos to like my main core audience in India, but it is what it is. As a human being, I pray that innocent civilians from both sides should not die. True, we don't want the innocent civilians to die. Unfortunately, they are. Dear India, I'm from Israel. I don't know Hindi, but if you're talking about Chabahar port, then let me tell you that it's the most important time for Israel. You can't imagine. We waited for years. Iran tried to do the same with Haifa. Israel always supported you, so we sincerely request you support Israel this once. We expect your support. Who's this guy? 100+ comments on here? Who's this? Who are you? 100+ comments? I don't know. Are we sure this guy's an Israeli? 100+ comments on here on a Hindi specific channel. Oh, like literally the top comment. Your account is based in India. Okay. Israel's on the world's most advanced nations in science and technology. Okay. Kashmir students were studying in
Madrasa Chapter University in Iran. These days have been really tough for us here in Israel. There have been a lot of fear and sadness and stress because of the war. It's not easy to live with sirens, news of attacks, and worry for our families and friends in the middle of all this. I just want to say thank you, the people of India. Friendship is with U.S. is similar to have 100 enemies that would watch your back. PD Fantasies. Chab report is a small price. Iran tried the same with Haifa many times. Israel needs our help more than ever, and this is our chance. Israel always helped India, so kindly this support Israel, even if it means Chab report. Interesting. Very interesting. Very interesting. Okay, well, I mean, it's something we got to keep in mind, right? We got to keep an eye on it. PD10, everyone. PD10. Use code PD10. I'll catch you on the next one. Yeah. Take care. Goodbye.